Students, now we'll discuss about the different cases of the Doppler's effect कि अगर सोर्स जो है वो टूवर्ड्स डिटेक्टर मूव कर रही हो या डिटेक्टर मूव कर रहा हो टूवर्ड्स सोर्स या दोनों एक दूसरे से वे मूव कर रहे हो, तो विच वन ऑफ द केस, तो हम उसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑफ एफ डी इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वी डी ओवर वी माइनस प्लस वी एस इंटू एफ एस। अच्छा अब ये मैंने आपको लास्टली भी मतलब हमने डिस्कस किया था कि व्हेन anyone or both are moving towards each other, so we will use the upper signs in the numerator and as well as in the denominator, and if anyone or both are moving away from each other, then we will use the lower signs in the numerator as well as in the denominator of this formula. Now we'll discuss about the case 1. We have the two parts of the case 1 because here we are considering the detector is stationary, that's why we are writing here Vd is equals to 0. The first part of the case number 1 is a source is moving towards stationary detector. Okay, it is a case of towards motion, तो keep in your mind कि we will use the upper signs, तो उसके लिए फिर हम Vd को 0 सपोज करेंगे, मैं इसको यहाँ पर सर्किल कर रहा हूँ, तो इसको हम 0 सपोज करेंगे और वी विल यूज़ द अपर साइंस। अच्छा, अब अगर हम वी डी को 0 सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, तो फिर ये प्लस माइनस का तो रेफरेंस ही ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस डिनोमिनेटर में रह जाएंगे, और क्योंकि टूवर्ड्स मोशन है, मूवमेंट है, तो इस तरह से हम अपर साइंस यूज़ करेंगे। तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन फॉर दिस केस जस्ट लाइक के एफ डी इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय V minus Vs into Vs. अच्छा, the second part of the case number 1 is a source is moving away from the stationary detector. Now we have the movement away movement and the Vd is equals to 0, तो Vd तो 0 ही रहेगा और away movement के लिए हम lower signs use करेंगे. So that's why we will write now this formula just like Fd is equals to V over V plus Vs into Fs, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर में अपर साइन माइनस है और लोअर साइन प्लस है, दैट्स वाई। अच्छा, नाउ वी आर कंसिडरिंग हियर द नेक्स्ट केस, दैट मीन्स केस नंबर 2, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केस नंबर 2 इन विच वी हैव अ डिटेक्टर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड्स द स्टेशनरी एम्बुलेंस अगर मूव कर रहा है तो फिर क्या कंडीशन होगी। अच्छा, अब स्पीड ऑफ द सोर्स ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पर ये वी एस जो है ये ज़ीरो कंसिडर करेंगे हम। अब ये सर्किल जो है मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर लगा देता हूँ, मतलब ये वी एस ज़ीरो के इक्वल होगा और ये प्लस माइनस साइन डिनोमिनेटर में से ख़त्म हो जाएंगे। ओनली वी हैव द वन क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर नाउ, दैट इज़ वी, और ऊपर प्लस माइनस साइन होगा, एंड बिकॉज दिस मूवमेंट इज टूवर्ड्स मूवमेंट सो विल यूज हियर द अपर साइंस। तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा फिर एफ डी इज इक्वल्स टू वी प्लस वी डी एंड डिवाइडेड बाय वी एंड होल इनटू वी एस। अच्छा, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड केस इज a detector is moving away from the stationary source. तो इसका मतलब ये person is moving away from the stationary ambulance, तो इसमें भी Vs 0 के इक्वल है, and because here we have the away movement, तो इसमें हम lower signs यूज़ करेंगे और denominator में lower sign माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि we can write this formula in the form like V minus Vd and divided by V and whole into Vs. Students, the case number 3 is regarding the movement of both the source and the detector. Okay, and the first part of this case is if both are moving towards each other. अच्छा, अब जब दोनों मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम Vd भी कंसिडर करेंगे एंड वी ऑल्सो कंसिडर द Vs, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द सोर्स एंड द स्पीड ऑफ द डिटेक्टर, बिकॉज बोथ आर इन मूविंग कंडीशन, दैट्स वाई। And because of the towards movement we will use the upper signs, so in the
numerator we have the upper sign as plus, so we will write V plus Vd, and in the denominator we have the upper sign as minus, so we will write here V minus Vs, okay, and into Fs. Achha, now the next part, the second part of the third case is if both are moving away from each other. So for the away movement we will use the lower signs, and this formula can be written as the Fd is equals to V minus Vd and divided by V plus Vs, because the lower sign in the numerator is minus and the upper sign in the denominator is plus. Okay, students, now we'll discuss about the fourth case in which the one object, that means source, sound source or the detector is following the other one. अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ही बताना चाहता हूँ, वो ये कि if the source is following the detector which is also moving, तो हम ये suppose कर लेते हैं यहाँ पर कि the source is following the detector it is the source which is moving with the speed Vs, and it is the detector which is also moving with the speed Vd. That means the source is following the detector. अच्छा, अब ये देखें कि डिटेक्टर जो है वो अवे मूव कर रहा है और सोर्स टूवर्ड्स द डिटेक्टर मूव कर रही है. तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली डील करना पड़ेगा विद द फॉर्मूला, क्योंकि स्पीड ऑफ सोर्स जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है और स्पीड ऑफ डिटेक्टर जो है ये हमारे पास न्यूमिनेटर में है. And the value which is in the numerator, that is Vd, it is moving away from the source, so that's why in the numerator we will use the lower signs, so that formula can be written as, that is Fd is equals to V minus Vd. Why we are using here the negative sign, that means lower sign in the numerator, because the detector is moving away from the source. Okay, acha. So in the denominator we have the Vs and the source is moving towards the detector, so we will use the upper signs. That means we will use a negative sign in the denominator and the formula becomes V minus Vd over V minus Vs into Fs. Now the same concept we will use here in the next case, that means the second part of the fourth case, in which if the detector is following the source which is also moving. The detector is following the source, so for example it is the source which is moving with the speed Vs, and it is a detector which is following the source with the speed Vd. Now students, we know that the detector is moving towards the source and the source is moving away from the detector. So अब we know that Vd is in the numerator and we will use this upper signs because the detector is moving towards the source. So that formula can be written for this case as the Fd is equals to V plus, because of the towards source we will use the upper signs in the numerator, so V plus Vd, and Vs is in the denominator and it is the source is moving away from the detector, so we will use the lower signs, so V plus Vs into Fs. ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.